ভয়ঙ্কৰ ৰূপ লৈছে দিল্লীৰ বান পৰিস্থিতিয়ে। বিগত কেইবাদিনো ধৰি হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত দিল্লীৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল এতিয়া বানত বুৰ গৈছে। বিশেষকৈ লালকিল্লা, ৰাজঘাট, কাশ্মীৰী গেট, চিভিল লাইন্স, ITO, শান্তিবন আদি অঞ্চল সৰ্বাধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। দিল্লীৰ বানত 3টা শিশুৰ মৃত্যু হৈছে। দিল্লীৰ মুকুন্দপুৰ চৰকত মেট্ৰ লাইনৰ নিৰ্মাণস্থলীত নিখিল, পীযুষ আৰু আশিষ নামৰ 3 শিশুৰ মৃত্যু হৈছে। পানীত বুৰ গৈছে ৰাজঘাট। মহাত্মা গান্ধীৰ সমাধিস্থলৰ প্লেটফৰ্মলৈ পানী উঠিছে। দিল্লীৰ ৰিং ৰোড, ইন্দ্ৰপ্ৰস্থ মেট্ৰ ষ্টেচন, বিকাশ মাৰ্গ, উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ যোৱা পথ, এই সকলো পথতে যাতায়াত ব্যাহত হৈছে। বহু ঠাইত কেইবা ঘণ্টা ধৰি যাত্ৰী আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে। 20টাতকৈও অধিক NDRFৰ দলে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে। প্ৰায় 5000 আৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছে বিভিন্ন স্থানত। আৰু কালি বৰষুণৰ পৰিমাণ কিছু কমিছিল যদিও বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আজি পুনৰ বৰষুণ হোৱাৰ সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে। দিল্লীত হালধীয়া সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। ড্ৰোন ভিজুৱেলতো দেখিবলৈ পোৱা হৈছে দিল্লীৰ বান পৰিস্থিতিৰ ভয়াৱহ ৰূপ। ইফালে যমুনা নদীৰ জলস্তৰ কিছু কমিছে যদিও এতিয়াও বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ আছে নৈৰ জলস্তৰ। ইপিনে বিভিন্ন ঠাইলৈ গৈ বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। দিল্লীৰ বানপীড়িত অঞ্চলসমূহতো জাৰি কৰা হৈছে 144 ধাৰা। স্বাভাৱিক জীৱন আৰু যান বাহন চলাচলত ব্যাঘাত জন্মিছে দিল্লীবাসীৰ। মন্ত্ৰী আতিশীৰ মতে এই বানপানী কৃত্ৰিম বান নহয়, বৰং হাতীকুণ্ড নদী বান্ধৰ পৰা অতিৰিক্ত পানী এৰি দিয়াৰ ফলতে হঠাৎ বানৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাজধানী দিল্লীত। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে সেনা বাহিনীৰ ওচৰতো সহায় বিচাৰিছে উদ্ধাৰ অভিযানৰ ক্ষেত্ৰত। বিগত 45 বছৰৰ অভিলেখ ভংগ কৰি দিল্লীত এতিয়া এনেদৰে বানে বিপৰ্যস্ত কৰি তুলিছে জনজীৱন। আনকি লালকিল্লাৰ এতিয়া দেৱাল স্পৰ্শ কৰিছে বানে। राजधानी दिल्ली में जिस तरह यमुना का जलस्तर बढ़ा है, उसकी वजह से आम जनमानस जो है उनकी आवाजाही पर भी गहरा असर पड़ा है। आप देख सकते हैं कि समय मैं दिल्ली के ITO पर हूं और लगभग 48 घंटे से ज्यादा का समय फिलहाल बीत चुका है। 48 घंटे से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी जो पानी है वो ITO, राजघाट और इन तमाम जगह पर जस का तस बना हुआ है। तमाम लोग देखिए, ये लोग जो है वो ऑफिसेज की तरफ जा रहे हैं। देखिए उन तमाम लोगों की जो गाड़ियां हैं वो खराब हो रही हैं। वजह है कि पानी का जलस्तर जिस तरह बढ़ा है उसकी वजह से तमाम लोग काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए सबसे ज्यादा जो ऑटोज हैं वो फिलहाल परेशान हो रहे हैं। लंबे समय से उनकी गाड़ियां खराब हो जा रही हैं और पानी से अपनी गाड़ी को बचाने के लिए उनकी तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है। ये तीसरी या चौथी गाड़ी है। कहाँ खराब हो गई गाड़ी? लाल बत्ती से आया हुआ है। पूरा आगे भरा हुआ है पानी? हाँ, पूरा भरा हुआ है। तो फिर आप लोग और कोई अल्टरनेट रास्ता नहीं ले रहे हैं? पानी के रास्ते से ही निकलना? भैया पैसे से तो मिलता नहीं है, कम पैसे, अब लंबा चौड़ा घूमना पड़ता है, फायदा होता नहीं है कुछ। फायदा तो ऐसे गाड़ी खराब हो रही है, इससे दिक्कत? तो गलती हो गया, मैं घुस गया हूँ, गलती कर दिया हूँ। गलती हो गया। कहाँ से आ रहे हो आप लोग? नई दिल्ली सर, नई दिल्ली से आ रहे हैं। तो आप लोग को पता था कि दिल्ली में इस तरह बाढ़ आया हुआ? हाँ जी सर, जो पता था, लेकिन जो फिलहाल ड्राइवर जो इधर से रोड लगा दी सर। अच्छा ठीक है। तो देखिए ये तमाम जो लोग हैं वो अपनी जीविका को चलाने के लिए फिलहाल रोजगार कर रहे हैं, लेकिन वजह यह है कि जिस तरह राजधानी दिल्ली में चारों तरफ पानी, उसकी वजह से ये फिलहाल एक बड़ा संकट है इन तमाम लोगों के लिए। लेकिन आप देखिए फिलहाल ये ITO है जहां पर लगातार पानी का जो जल स्तर है वो जस का तस है। चूंकि कोई भी आवागमन का रास्ता नहीं है, दिल्ली पुलिस ने इसके चारों तरफ के जो रास्ते हैं वो फिलहाल बंद कर रखे हैं। लेकिन जो रोजमर्रा के लोग हैं वो फिलहाल इसी पानी के सहारे अपनी जीविका को चलाने के लिए जाते हैं। लेकिन देखिए किस तरह तमाम जो गाड़ियां हैं वो यहां से गुजर रही हैं, लेकिन पानी का जलस्तर आप देख सकते हैं कि फिलहाल जस का तस बना है। चूंकि हम लोग अभी फिलहाल किनारे हैं इसलिए पानी हमारे घुटने के नीचे है, लेकिन अगर हम और थोड़ा सा अंदर की तरफ बढ़े तो कहीं ना कहीं पानी कमर तक है। यानी कि जो पानी है वो फिलहाल चारों तरफ ITO पे देखने को मिलेगा और यही वजह है कि जो सीवेज है वो भी ब्लॉक हो गए हैं, जिसकी वजह से जो पानी है वो रिवर्स फ्लो मार रहा है और पानी का जो जलस्तर है वो बढ़ा है। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से पानी के जलस्तर को कम करने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं, सेना तक की भी मदद ली जा रही है। लेकिन फिलहाल यमुना का जो रौद्र रूप है वो जारी है और वजह ये है कि लगातार लोगों को तमाम जो परेशानियां हो रही हैं उसका सामना वो कर रहे हैं। सरकार अपनी तैयारी कर रही है, लेकिन पानी लगातार बढ़ रहा है जिसकी वजह से तमाम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन रविंदर के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली।
यहाँ पे अभी हम आए हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 गेट जो हैं, ये दोनों गेट बंद हैं, 5 गेट बंद हैं 32 में से, जिसकी वजह से पूरा पानी पूरे फ्लो के साथ जितना पानी दिल्ली में एंटर कर रहा है वो पानी बाहर नहीं निकल रहा। तो इस वजह से दिल्ली में पानी रुक जाता है तो पानी फैल जाता है चारों तरफ। ये अभी काफ़ी इसकी पे कोशिश जारी है और नेवी के लोग भी आए हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये जल्दी, अब ये उनको भी पूरी उम्मीद है, उनसे भी मैंने बात की कि ये 5 गेट खुल जाएंगे तो उससे पानी का बहाव तेजी के साथ दिल्ली से पानी छोड़ना चालू हो जाएगा। दिल्ली के 3 बच्चे डूब करके मर गए हैं, 3 मौतें ये हुई। बहुत दुखद बात है। वो तीनों बच्चे नहाने के लिए गए थे उसमें, नदी में पता चला, और हमने कई बार बोला है कि नदी से दूर रहिए। कई लोग एक तरह से देखने जा रहे हैं, बाढ़ देखने जा रहे हैं, वो भी मत कीजिए। कई बार अचानक पानी बढ़ जाता है तो सेल्फी ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, वो सब मत कीजिए। नहाने के लिए अभी नदी का बहाव इतना तेज है, आप अच्छे से अच्छे अगर स्विमर भी हैं तो भी इस नदी का बहाव आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इतने सालों के बाद भी सरकार में रहने के बावजूद आज दिल्ली की ये हालत है कि हर जगह पानी पानी। आप इमेजिन करिए उन गरीब लोगों का जिनकी दुकानों में, जिनके घरों में पानी गया है। प्रॉब्लम ये होना ही था और इसमें कोई सरप्राइज नहीं था, क्योंकि अगर आप 9 साल से सरकार में अगर आप 1 रुपया भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च नहीं करेंगे, सिर्फ फ्रीबी की राजनीति करेंगे, वोट बैंक की राजनीति करेंगे, तो कभी ना कभी तो दिल्ली और इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो गई। जैसे देश की आबादी बढ़ रही है, दिल्ली की भी आबादी बढ़ रही है, लोग हर जगह से दिल्ली में आ रहे हैं। जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं देंगे तो ये चीज़ कोई सरप्राइज नहीं है। इससे पहले बहुत लोगों को ये सरप्राइज लगा होगा, लेकिन मेरे को किसी भी तरीके का कोई सरप्राइज नहीं लगा, क्योंकि जब पोल्यूशन होता है तब भी आप कहते हैं कि आपके पास किसी तरीके का कोई उपाय नहीं है। जब वाटर लॉगिंग की समस्या आती है, मानसून होता है, तब भी आपके पास किसी तरीके का कोई सोल्यूशन नहीं है। कोविड के टाइम पे भी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि किस तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं। जब आपके खुद के नेता ये बोलना शुरू कर दें कि हम सिर्फ 100 mm की बारिश के लिए या पानी के लिए रेडी थे, लेकिन 150 mm की बारिश हो गई, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। आप ये बताइए बाहर आके कि आपने 9 साल में किस तरीके से दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, कितना आपने पैसा खर्च किया। आपके सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। यमुना का जल स्तर तो घटा है, लेकिन मैं राजघाट के बाहर की तस्वीरें आपको दिखाना चाहती हूँ कि कल हमने आपको यहीं से तस्वीरें दिखाई थी और यहाँ पर जो पानी है वो कल से भी ज्यादा बढ़ गया है। और आप देखें तो यहाँ पर जो राजघाट है वो पूरी तरीके से डूबा हुआ नजर आ रहा है। अंदर बापू की समाधि है वो भी पानी में डूबी हुई है और पूरा जो राजघाट है वो एक तरीके से डूबा हुआ नजर आ रहा है। पानी ही पानी है। जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे, कैमरे की नजर से मैं आपको दिखाना चाहूंगी, कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो दिखाएं आपको, तो दूर तक जहां आप देखेंगे सिर्फ पानी ही पानी आपको यहां पर नजर आएगा। पेड़ पौधे आधे से ज्यादा पानी के अंदर डूब चुके हैं। और आपको ये भी दिखाना चाहेंगे, आपको सामने अगर एक छोटा सा व्हाइट कलर का गेट नजर आ रहा हो तो वही राजघाट के एंट्रेंस का गेट है जो आधे से ज्यादा पानी में डूब चुका है। और पानी के अंदर की स्थिति भी आपको दिखाना चाहेंगे कि आप देखिए तो पानी काफी ज्यादा गंदा है। यहाँ पर जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी हैं। कल यहाँ पर हमने सांप भी दिखाया था, जो सांप निकला था। तो ऐसे में काफी ज्यादा लोगों को परेशानियां हो रही है। दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहेंगे कि राजघाट की तरफ आने वाले जो रास्ते हैं उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया है। इससे भी आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सामने आपको बैरिकेडिंग दिखाई दे रहा होगा, वो ITO से आने वाला रास्ता है उसे भी वहां पर रोक दिया गया है। राजघाट की तरफ के जो चारों तरफ के रास्ते हैं उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया है। जो पर्यटक दिल्ली से बाहर से यहाँ पर घूमने आते हैं उन्हें भी मायूसी ही हाथ लग रही है, क्योंकि इस वक्त पानी भरा हुआ है। तो जो लोग राजघाट के दर्शन के लिए या गांधी दर्शन के लिए आना चाहते थे वो भी यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं। तो एक तरीके से ये कहें कि जो तस्वीरें हैं वो बेहद डराने वाली है। पानी आप देखें, क्योंकि बारिश का सीजन है, ऐसे में तमाम तरीके की बीमारियां होने की संभावना रहती है। और जिस तरीके की गंदगी का अंबार यहाँ लगा है वो साफ तौर में अपनी कहानी बयान कर रहा है। सवेरे से ही आर्मी के जवान यहाँ पर मौजूद थे और ये टास्क बहुत बड़ा था, क्योंकि यहाँ पर जो करंट था वो 5 से 6 नॉट का था, जहाँ पर खड़ा होना बहुत मुश्किल था। 5 से 6 फीट डीप ये एरिया था, लेकिन हमारे जवानों ने बहुत मेहनत के साथ यहाँ पर काम किया। और आपने देखा है कि ये जो ब्रीच हुआ था इसको अब बंद बना दिया गया है और अब इस वक्त हम लोग जो है दूसरी साइड पर बंद के आकर खड़े हो गए हैं, जो टूटा हुआ था। इसके बंद हो जाने से जो पानी का प्रेशर रेगुलेटर पे आ रहा था वो खत्म हो गया है और रेगुलेटर से भी आपने देखा है कि वो पानी बहुत स्पीड से अब यमुना की तरफ जाने लगा है। বাতৰি পৰৱৰ্তী অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে পুনৰ লৈছো আন এটি বাণিজ্যিক বিৰতি।
কেৱল ষ্ট্ৰং নহয়, মাইথান ষ্ট্ৰং, মাইথান ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড। Sixteen channels, 15 languages. টিম ইণ্ডিয়াত প্ৰথম অসমীয়া উমা চেত্ৰী। হেমাংগ বৰুৱা, ৰাজেশ বৰা, গৌতম দত্ত, আবনী সিং, কৃষ্ণ দাস, ৰিয়ান পৰাগে দেখুৱাই যোৱা বাটেৰে বাট তুলি বহুদূৰ আগুৱাই গ'ল অসমৰ উমা চেত্ৰী। পুৰুষ মহিলা নিৰ্বিশেষে ভাৰতীয় ছিনিয়ৰ দলত স্থান পোৱা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া ক্ৰিকেটাৰ হিচাপে পৰিগণিত হ'ল উমা চেত্ৰী। বোকাখাতৰ খেতিয়কৰ ঘৰৰ ছোৱালী উমা। নাই যি নাই, কান্ধুলিমাৰীৰ ঘৰখনলৈ যোৱা সুচল বাট এটাও নাই। মাক দেউতাক, 3জন ককায়েক আৰু এগৰাকী বৌয়েকৰ সৈতে এটা ডাঙৰ পৰিয়াল উমাৰ। 7 খাৱৰীয়াৰ উদৰ পূৰাবলৈ দিনে ৰাতিয়ে পৰিশ্ৰম কৰিব লগা হয় পৰিয়ালটোৰ প্ৰতিজন সদস্য। কিন্তু তাৰ পাছতো ক্ৰিকেটৰ অনুশীলন অব্যাহত ৰাখিছিল উমাই। কিপিং আৰু বেটিং ধাৰাবাহিক অনুশীলনৰ সুবাদত দুয়োবিধ কলাতে নিপুণ হৈ উঠিছে উমা চেত্ৰী। বোকাখাতৰ কান্ধুলিমাৰীত বোকা খচকি ডাঙৰ হোৱা উমা চেত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে ভাৰতীয় দলৰ সৈতে খেলিছে হংকঙৰ টুৰ্ণামেণ্টত। কিন্তু এইবাৰৰ কথা পৃথক। এইবাৰ ভাৰতীয় ছিনিয়ৰ দললৈ নিৰ্বাচিত হৈছে উমা। বাংলাদেশ ভ্ৰমণ কৰিব লগা ভাৰতীয় দলত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে উমাৰ নাম। T20 আৰু এদিনীয়া দুয়োটা ফৰ্মেটত খেলিব উমাই। খুব ভাল লাগিছে, আমাৰ বহুত বহুত ভাল লাগিছে। এতিয়া তাইৰ আশা আছিলে, মোৰো বহুত আশা আছিলে তাই ক্ৰিকেট খেলিব। তাইৰ যিটো খেলৰ প্ৰতি যিটো আছিলে সেইটো আজি পাইছে। তাই কষ্টতে পাইছে। বাংলাদেশত খেলিব যাব, অলপ দিন আগত হেৰিৰ পৰা খেলি আহিছে, কি ক'ব? বহুত ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। অসমৰ প্ৰথমগৰাকী ক্ৰিকেটাৰ হিচাপে টীম ইণ্ডিয়াৰ ছিনিয়ৰ দলত উমা চেত্ৰীয়ে স্থান পোৱাৰ পাছতে বোকাখাতৰ কান্ধুলিমাৰীৰ ঘৰত উপস্থিত হ'ল মন্ত্ৰী অতুল বৰা। ঘৰখনত উপস্থিত হৈ জৰাজীৰ্ণ পথছোৱা নিৰ্মাণৰ বাবে লোক নিৰ্মাণ বিভাগক নিৰ্দেশ দিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ভাৰতীয় মহিলা টীমত স্থান পোৱা উমা চেত্ৰীৰ ঘৰত মই আছোঁ। তেওঁৰ মাক দেউতাকক লগ পাইছোঁ, ওচৰ চুবুৰীয়া আছে। কান্দুলিমাৰী গাঁওখনৰ ৰাইজ অত্যন্ত আনন্দিত, উৎসাহিত। এইটো অত্যন্ত আমাৰ বাবে আনন্দৰ আৰু গৌৰৱৰ বিষয়। তেওঁৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত আমি কামনা কৰিছোঁ। কেৱল মন্ত্ৰীয়েই নহয়, অসমৰ নাম উজ্বলোৱা উমা চেত্ৰীক বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামৰ প্ৰেক্ষাগৃহত সম্বৰ্ধনা জনালে অসম ক্ৰিকেট সন্থাই। লগতে উমাৰ হাতত অৰ্পণ কৰিলে 5 লাখ টকাৰ চেক। 6 জুলাইত ভাৰতীয় দলৰ সৈতে যোগ দিবলৈ বোকাখাতৰ পৰা অহা উমা চেত্ৰীক আমিও জনাইছো আন্তৰিক শুভেচ্ছা। বিপুল বৰ্মনৰ সহযোগত বোকাখাতৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি ৰাজখোৱা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰাজ্যত HIV-ৰ ভয়াৱহ সংক্ৰমণ। তিনিচুকীয়াৰ পাছত ধুবুৰীত HIV-ৰ সংক্ৰমণৰ উদ্বেগজনক তথ্য। এটা ব্ৰেকিং নিউজ, চিৰাগ পাছৱানলৈ জে পি নাড্ডাৰ পত্ৰ।
লোক জনশক্তি পাৰ্টি ৰামবিলাসৰ সভাপতি চিৰাগ পাছোৱান 18 জুলাইত এনডিএৰ বৈঠকলৈ নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে চিৰাগ পাছোৱানক নতুন দিল্লীৰ অশোক হোটেলত বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব এনডিএৰ আগন্তুক 24ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত এনডিএৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক আৰু এই বৈঠকখন সন্দৰ্ভত চিৰাগ পাছোৱানলৈ জেপি নাড্ডাৰ পত্ৰ লোক জনশক্তি পাৰ্টি ৰামবিলাসৰ সভাপতি হৈছে চিৰাগ পাছোৱান 18 জুলাইত এনডিএৰ বৈঠকলৈ নিমন্ত্ৰণ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে চিৰাগ পাছোৱানলৈ নতুন দিল্লীৰ অশোক হোটেলত অনুষ্ঠিত হ'ব এনডিএৰ বৈঠক ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰে যুটীয়া বিবৃতি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দুইখন দেশে সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে একেলগে কাম কৰি যাব প্ৰতিৰক্ষা সহযোগিতাৰ ক্ষেত্ৰতো দুইৰে মাজত আলোচনা সকলো সমস্যাৰ সমাধান আলোচনাৰ দ্বাৰা কৰা হ'ব মহাকাশ বিজ্ঞানক লৈ ফ্ৰান্স ভাৰতৰ মাজত চলিব সহযোগিতা মেক ইন ইণ্ডিয়া আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ অন্যতম অংশীদাৰ ফ্ৰান্স মেক্ৰৰ সৈতে নৈশ ভোজতো অংশ ল'লে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে মেক্ৰৰ সৈতে উঠিলে সেলফিও বছৰৰ প্ৰথমটো বানত প্লাবিত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ তিনিটা বনাঞ্চলৰ বহু অঞ্চল এতিয়া জলমগ্ন হৈছে উদ্যানখনৰ অগৰাতলী বনাঞ্চলৰ কিংকোব্ৰা এৰাখুটি মোৱামাৰী বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলৰ হাতী কেম্প আৰু কহৰা বনাঞ্চলৰ আৰিমৰা নাস্তে বৰবিল আদি কেম্প ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে প্লাবিত কৰিছে উদ্যানখনৰ ভিতৰত 10 অঞ্চলসমূহ ইতিমধ্যে ভৰি পৰিছে বাঢ়নী পানীৰে যাৰ ফলত ওখ ঠাইসমূহত বিচৰণ কৰিছে বন্যজন্তুৱে ইতিমধ্যে বান পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সাজু হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ উদ্যানখনৰ সঞ্চালক যতীন্দ্ৰ শৰ্মাই জনোৱা তথ্য অনুসৰি বৰ্তমান কেইবাটাও পেট্ৰলিং পথ পানীৰ তলত থকাৰ লগতে একাংশ বন শিবিৰত 3 ফুট পৰ্যন্ত পানী উঠিছে যদিও জীৱ-জন্তুৰ বাবে নাই বিশেষ অসুবিধা বৰ্তমান কাজিৰঙাত নতুন পুৰণা মিলাই মুঠ 144টা হাইলেণ্ড আছে ইয়াৰ উপৰি আৰু পানী বাঢ়িলেই কাজিৰঙাৰ ৰাজপথত টাইম কাৰ্ডৰ ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰা হ'ব বৰ্তমান 30 জন অতিৰিক্ত বনকৰ্মী মোতায়েন কৰা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত দিনৰ সমানে নিশাও 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত স্থাপন কৰা অস্থায়ী টঙিত কৰ্তব্য সমাপন কৰিছে বনকৰ্মীয়ে কাৰ্বি পাহাৰলৈ যোৱা বন্যজন্তুৰ সুৰক্ষাৰ দিশত অধিক তৎপৰ হৈছে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ লগতে সঞ্চালকগৰাকীয়ে কয় যে বানৰ সময়ত যাতে চোৰাং চিকাৰীয়ে কাজিৰঙাত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে সষ্টম হোৱাৰ লগতে নিয়োগ কৰা হৈছে চোৰাংচোৱা আনহাতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰত বানৰ কবলত পৰি ওলাই যোৱা 3টা পোহনীয়া কুকুৰৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে বুলি জনাই সঞ্চালকগৰাকীয়ে আৰু ইফালে চলিত বৰ্ষৰ দ্বিতীয়টো বানত বুৰ গৈছে গোলাঘাট জিলাৰ ডেৰগাঁৱৰ পূব ব্ৰহ্মপুত্ৰ অঞ্চলৰ কেইবাখনো গাঁও ডেৰগাঁৱৰ পূব ব্ৰহ্মপুত্ৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত সদাৰ নতুন চাপৰি হলাবোৱা চমুৱা গড়মৰা লগতে মধ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত বহুকেইখন গাঁও জলমগ্ন হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পাই থকাত দাঁতিকাষৰীয়া আৰু বহু গাঁও বৰ্তমান পৰিস্থিতি অধিক জলমগ্ন হোৱাৰ আশংকা প্ৰকট হৈছে বাঢ়নী পানীয়ে উটুৱাই নিছে মূল পথ বানত বাট পথ সকলো বৈ যোৱাত ব্যাহত হৈছে স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা অঞ্চলটোৰ অধিকাংশ কৃষিভূমি জলমগ্ন হৈ পৰাত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৃষক ৰাইজৰ যোৱা নিশাৰ পৰা পানী যিটো গতিত বাঢ়িলে এই গতিত বহাৰ ফলত আজি চিৰিষ্টিকা সদাৰ হাঁহচোৱা মিলনপুৰ এটাইখন গাঁও একদম ডুবি গুচি গ'ল ইয়াত দেখিছে চিৰিষ্টিকাটো সদাৰ যিটো ৰাস্তা আছে এই ৰাস্তাটোত ইয়াত পানী মানুহ পাৰ হ'ব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে এককাল পানী হৈছে ইয়াত ক'ত যিটো পৰিছে মানুহ ইফালে পাৰ হৈ যাব নোৱাৰে আৰু এই পানীয়ে বাৰীয়ে ঘৰ আপোনালোকে দেখি আছে বাৰীয়ে ঘৰ মানুহৰ দুই এঘৰ পানীৰ ভিতৰত সোমাইছে কিছুমানে ভেটিটো থকাৰ কাৰণে এতিয়া ভিতৰত কিছুমানৰ সোমোৱা নাই কিন্তু দুই এঘৰ মানুহৰ ভিতৰত সোমাই গৈছে ৰাস্তাটো প্ৰায় ছিঙিয়ে নিছে এতিয়া ৰাস্তা ছিঙি আনিছে এইটো কোনটো ৰাস্তা এইটো চিৰিষ্টিকা সদা ৰাস্তা এইটো চৰকাৰে আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থাই নকৰিলে এইটো আকৌ চিৰিষ্টিকা সদা চৰাই চাপৰি মূল পথ আছিলে এইটো কোন সমষ্টি অন্তৰ্গত এইটো ডেৰগাঁও সমষ্টি এই ৰাস্তাটো তথা চৰকাৰক বাৰম্বাৰ জনাৰ পাছতো আজিলৈকে চৰকাৰে এই ৰাস্তাটো কোনো ব্যৱস্থা নকৰিলে যে সময়ত চৰকাৰে উন্নয়নৰ নামত বন ধ্বংসযজ্ঞ পাতিছে সেই সময়তেই দুধনৈৰ শিলৰ বৰি দুখন গাঁৱৰ ৰাইজে দেখুৱাইছে এক অনন্য নিদৰ্শন
মানুহৰ মাজত বিলাইছে প্ৰকৃতি প্ৰেমৰ কথা বাৰ্তা দিছে গছ থাকিলেহে মানুহ থাকিব মানুহক বুজাইছে গছ থকাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা প্ৰায় 25 হেক্টৰ মাটিত গঢ়িছে সেউজীয়া ঘন অৰণ্য 1995 চনত বন লঠঙা হোৱা এই বনাঞ্চলখন ৰাজ্যৰ প্ৰচেষ্টাত এতিয়া বনৰীয়া হাতীৰ বাসস্থানলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে হস্তি কৰিডৰো হৈ পৰিছে এই বনাঞ্চলখন বিভাগ এটাই কৰিব নোৱাৰা কাম কৰি দেখুৱালে গাঁওবাসীয়ে বিগত দিনসমূহত বহু প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজেৰে কাম কৰি এতিয়া 10 জনৰ প্ৰশংসা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গাঁওবাসীয়ে বনাঞ্চল প্ৰায় 20 পৰা 25 হেক্টৰ মাটি আৱৰি আছে আৰু এই হাল গছেৰে ভৰা এই বনাঞ্চলখন সংৰক্ষণ কৰিছে কেৱল ৰাইজে আৰু ৰাইজৰ তত্বাৱধানতে লহপহকৈ বাঢ়িছে এতিয়া এই বনাঞ্চলখন আৰু মোৰ সতীৰ্থই পোনপ্ৰথমে এই বনাঞ্চলৰ দৃশ্য দেখুৱাব আচলতে বন বিভাগে কি ধৰণে গোৱালপাৰা জিলাত বন ধ্বংসযজ্ঞ চলাইছিলে এয়া আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছিলোঁ যদিও বা অৰণ্য ভ্ৰমণে এই গছ কটা কাৰ্যক নিৰ্দেশ প্ৰেৰণ কৰি আচলতে কটা বন্ধ কৰিছে গছ কটা বন্ধ কৰিছে কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ বন সময় হল দ্য মৰ্নিং শ্ব'ৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ খন্তেক বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছতে আমি লৈ আহিম বিগ ব্ৰেকিং নমস্কাৰ